Today we'll start off with the third chapter of O-level biology, which is diffusion, osmosis, and surface area to volume ratio. We are going to differentiate between the terms of diffusion and osmosis. What is the importance of water potential to plants and animals? What is going to happen to them if we place them in different hypertonic or hypotonic solutions? What is active transport? What are the different cells adaptations? And all of that we are going to cover today. So let's start by diffusion. Imagine that you are sitting in your bedroom reading a book or doing your homework, and meanwhile the food is cooking in the kitchen. होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता the smell of the food is going to reach out to you. You are going to be aware of the food cooking, and because you can smell it, because the food traveled from a region of a higher concentration towards you, you were in a region of a lower concentration. Somehow the smell of the cooking food has spread from the kitchen into your room and into your nose, and as the food is being cooked, the individual molecules of food evaporate from the surface of the food and they become gas. And what has happened is that the gas is associated with smell, और gas की तो एक random movement होती है. Gases have a random movement and they are going to move from a region of higher concentration to a region of lower concentration through random movement down a concentration gradient. We call it diffusion, which is the net movement of molecules of ions or molecules from a region where they are in a higher concentration to a region where they are in a lower concentration down the concentration gradient. The best way for us to understand diffusion is to picture it as the random movement of molecules down a concentration gradient. You can see the graph below as well. This shows down a concentration gradient. Down a concentration gradient क्या क्या होता है? For example, एक जगह है जहाँ पे concentration 10 सेंटीमीटर क्यूब मोल पर डीएम क्यूब है. आप जहाँ पे बैठे थे वहां पे जो concentration है वो है 4 मोल पर डीएम क्यूब. तो स्मेल आएगी कहाँ से फैलेगी? The diffusion is going to take place from a region of higher concentration to a region of lower concentration. और इसको हम कहते हैं down the concentration gradient. अगर कोई चीज उलट जाएगी, if it goes the opposite way, the other way around from lower to high concentration, we call it against the concentration gradient. But जहां तक हम बात करें diffusion की, diffusion is down the concentration gradient. You can see over here, this is a region of a higher concentration, the point A, जहां मैंने कहा था ना 10 है concentration, it's going to move and spread out evenly through a region of lower concentration, which is 4, the point number B. So this red line is the concentration gradient between these 2 points. So the difference in concentration between 2 regions is known as diffusion or concentration gradient. Molecules or ions move diffuse down this gradient. The steeper this gradient, the faster the molecules will move. And this is a very important rule. Steeper the diffusion gradient, faster would be the rate of diffusion. For example, मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और वहां पे आपके पास 7 मॉलिक्यूल्स हैं. एक और जगह यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं बट यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं. दोनों में सिमिलैरिटी इजी है कि यस द डिफ्यूजन विल टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर, बट यहाँ पे फास्टर होगी. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 7, a higher difference in gradient, whereas over here there is only a difference of 3. यहाँ पे स्लो होगी डिफ्यूजन ही. दोनों में यहाँ पे राइट की तरफ ही जाने बट उधर फास्टर होगी. वी कॉल इट अ स्टीपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ पे एक स्टीपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, ऊपर देयर वाज अ लेस स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक सॉल्यूशन 2 चीजों से बनता है, द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट. सिंपल सी बात है, ये आपके पास सॉल्वेंट है और इसके अंदर कोई भी चीज जो डिसॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड एज सोल्यूट. मिलके दोनों बना लेंगे एक सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, a solution of copper sulfate in a gas jar investigation, the water was the solvent and copper sulfate was a solute. Aista aista, what is going to happen? They are going to dissolve evenly and diffuse evenly throughout the crystals in relative evenly quantities. So if we investigated, drop a copper sulfate crystal into a gas jar of water, cover the jar for a few days, observe the changes in color of water. शुरू में क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा ज्यादा डार्क होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा इवनली कलर पूरे जार का एक ही हो चुका है. So this is what happening to the jar. Throughout the liquid, if there are more than one substance dissolved in the same liquid, dissolved particles or one substance diffuse independently of each other as well. The beaker contain 2 different solutions as well. Let's say अगर हम cells की बात करें, cells में अब कैसे diffusion होगी? And let's say the different solutions which are separated by a permeable membrane, a membrane that is permeable to both the solvent and the solutes. The left side of the beaker contains copper sulfate solution, while the right side of the beaker contains potassium iodide solution. एक beaker है और उस beaker के अंदर दोनों solutions are separated by a membrane.
एक तरफ आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और दूसरी तरफ आपके पास पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है. इन द मिडल वी हैव अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. Now the dissolved ions from the copper sulfate particles will diffuse across the membrane to the right side of the beaker, and potassium iodide will diffuse from the right side to the left side. अब होगा क्या कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे ज्यादा है तो ये वहां की तरफ मूव करेंगे. कॉपर सल्फेट लेफ्ट पे ज्यादा है तो ये राइट की तरफ मूव करेंगे. तो ऐसा है तो ये इवनली मिक्स हो जाएंगे until the copper ions and the potassium ions are going to have an equal concentration on both of the sides of membrane. Now imagine that the partially permeable membrane in the beaker was actually a cell surface membrane. इसी तरह सेल्स के दरमियान भी जो आपके पास डिफ्यूजन हो रही होती है वो भी कैसे होती है? थ्रू अ पार्शियली permeable membrane which allows only some substances through and not the other one. A substance could diffuse into cell or out of the cell if it was one of those substances which the cell membrane allowed to pass through, for example, oxygen and carbon dioxide. Diffusion is therefore an important way by which substances move into and out of the cells, for example, amoeba as well. Amoeba also lives by diffusion. It also gets rid of carbon dioxide by diffusion as well. So osmosis is also something like diffusion. The only difference is this is for water molecules. और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम नाम देंगे हाई वाटर पोटेंशियल का, and lower concentration would be known as a lower water potential, because we know that the cell surface membrane is a special membrane which allows some substances to pass through but not the others. इसलिए मेम्ब्रेन का नाम होता है पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पार्टिकल शायद गुजर जाए लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो शायद ना गुजर पाए. दिस ब्रिंग्स द सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन. For example, arm A contains 10% sucrose solution and B contains an equal volume of 5% sucrose solution. अब जिसमें 10% sucrose solution है वहां पे वाटर पोटेंशियल हायर है, लेकिन जहां पे कम सुक्रोज डिजॉल्व है, नहीं सॉरी, जहां पे आपके पास ज्यादा सुक्रोज डिजॉल्व है ना, दैट इज द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, क्योंकि पानी कम है सुक्रोज ज्यादा है. और दूसरी साइड पे पानी ज्यादा है सुक्रोज 5% है. सो व्हाट विल हैपन? द 5% सुक्रोज solution इज मोर डाइल्यूट. डाइल्यूट का मतलब हाई वाटर पोटेंशियल, और 10% वाला कॉन्सेंट्रेटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब लो वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा है. सो ऑब्वियसली जो पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन आपके पास होगी फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे थी आपके पास हाई वाटर पोटेंशियल और 10% सुक्रोज सोल्यूशन में यू हैव लो वाटर. जहां पे थोड़ा सा सुक्रोज है वहां पानी ज्यादा है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम मूवमेंट, एंड दिस विल इवनली डिस्ट्रीब्यूट द सोल्यूशन एज वेल. दिस लेवल्स विल ओनली स्टेबलाइज जब इन दोनों लेवल्स ए और बी के पास एक इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मौजूद हो जाएगी, एंड वी कॉल दिस डिफ्यूजन इन वाटर एज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस के अंदर जो हम वाटर पोटेंशियल का वर्ड यूज करेंगे क्या चीज है? You now need to think about osmosis in a slightly different but more useful way. The term water potential is used to describe the movement of molecules, and water potential is a measure of the tendency for water to move from one place to another. And it's always going to move from a region of higher water potential to a region of lower water potential. A dilute solution contains more water molecules than a concentrated solution. So यहाँ पे जब दोनों solutions की different water potential होगी, water is always going to move from a higher water potential to a lower one. लेकिन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहली बात, और दूसरी बात थ्रू अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन विच इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल. अब ऑस्मोसिस लिविंग सेल्स के अंदर वैसी ही होगी जैसे डिफ्यूजन आपके पास थ्रू पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन जाता था. दोनों सेल्स होंगे, दोनों सेल्स का एक एक साइटोप्लाज्म है. ये साइटोप्लाज्म इस सेल का और ये साइटोप्लाज्म दूसरे सेल का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन एज वेल, जहां पे यू कैन से कि ठीक है एक्सचेंज कैन हैपन इन बोथ ऑफ द वेज. This membrane is partially permeable, allowing water and many dissolved substances such as oxygen and carbon dioxide to pass through readily, but it is impermeable to large molecules such as proteins. The enclosed protoplasm is a complex mixture of various substances which together constitute the osmotic concentration of the cell. और अगर हम उसको एक dilute solution में डालते हैं, dilute solution में अगर हम एक सेल को डालेंगे, उस solution में water potential होगा ज्यादा. लेट्स से ये आपके पास वो बीकर है, दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसमें आपने अपना क्या कर दिया, सेल डाल दिया है. मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है और अंदर लो है. पानी सेल के अंदर मूव कर जाएगा और अंदर जाके इट्स गोना मूव इनटू द सेल, एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस. तो वहां से हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के नाम निकलते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है विद अ लोअर वाटर पोटेंशियल.
हाइपरटोनिक का मतलब होता है विद नहीं, हाइपर का मतलब होता है विद लोअर वाटर पोटेंशियल। हाइपोटोनिक होता है हाई हाई वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन, जिसमें पानी ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। और आइसोटोनिक होगा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ inside and outside. Consider two solutions x and y. Solution x has a higher water potential than solution y. Therefore x जो होगा वो हाइपोटोनिक है, y जो है वो हाइपरटोनिक है। सेल को जो हम आइसोटोनिक में इमर्ज करेंगे तो उसका ना सेल का साइज बदलेगा, ना शेप बदलेगी, ना वो बड़ा होगा सेल, ना छोटा होगा, क्योंकि ना पानी उस सेल से बाहर आया, ना ही पानी उस सेल के अंदर गया है। लेकिन अगर हम उसको एक किसमें अगर हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे, पानी सेल के अंदर जाएगा। और अगर वही सोल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मतलब कि हाइपरटोनिक, तो पानी सेल से बाहर सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। डाइल्यूट के अंदर द सेल इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब सेल पानी लूज करेगा, उसका साइज और मास कम हो जाएगा, जिससे कि वो श्रिंक करने लग जाता है। Notice that these terms are always used in relation to pairs of solution. For example, it makes no sense to say that a solution is hypertonic unless you have established earlier that what is hypertonic to. The cytoplasm of the amoeba is a hypertonic solution relative to the water in which it is living, whilst the water is hypertonic to the cytoplasm of amoeba as well. So what happens to a cell in a solution with a higher water potential? मतलब कि अगर वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर मौजूद है तो क्या होगा? A plant cell would behave differently from an animal cell क्योंकि plant cells have a cell wall, animal cells do not have a cell wall. As water is going to enter the cell, क्योंकि हाइपोटोनिक की बात हो रही है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी हमेशा सेल के अंदर आएगा क्योंकि सोल्यूशन में हायर वाटर पोटेंशियल होती है। The cellulose cell wall prevents the overexpansion of the cell by exerting an opposing pressure, preventing the entry of more water. When the cell is in this state, it becomes turgid, and the turgidity of the cell with water is called turgor, और इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं क्योंकि ये उसको स्टिफ रखता है, सेल को फटने नहीं देता है। ऑन दी अदर हैंड एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, वो बर्स्ट कर जाएगा और उसकी कुछ शेप ऐसी से हो जाएगी, वी कॉल इट कि इसकी शेप क्या होगी, ये क्रीनेटेड। अभी तक सारा समझ आ गया? इज इट ऑल क्लियर? सो व्हाट हैपेंस टू अ सेल विद अ लोअर वाटर पोटेंशियल? अब बात हो रही है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। हाइपर में सेल से बाहर आने पानी सोल्यूशन को चाहिए। वी हैव सीन दैट हाउ प्लांट सेल्स बिहेव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन सच एज हाइपोटोनिक। अब हाइपर में अलग सीन होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक में तो उसकी ये हालत हो गई थी, द सेल श्रिंक्ड अवे फ्रॉम द सेल, और पूरा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वो सारा माल होता है जो सेल वॉल के अंदर अंदर होता है, वो सारा श्रिंक हो गया क्योंकि वाटर लीव्स बाय ऑस्मोसिस। दिस इज व्हाट हैपेंस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपो में क्या हुआ, बाहर ज्यादा था वाटर पोटेंशियल, देयर वाज अ हाई वाटर पोटेंशियल आउटसाइड, लो वाटर पोटेंशियल इनसाइड, टर्गर प्रेशर वाज मेंटेन ओवर हियर। ये स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं टर्जिड, जहां पे सेल वॉल ने उसको फटने से रोका हुआ है, और इस स्टेज को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। एनिमल में प्लाज्मोलिसिस का वर्ड नहीं यूज करते, हम वहां पे यूज करते हैं क्रीनेटेड, ठीक है। यहाँ पे इट बिकम्स श्रिंक्स अगर हम उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, हाइपरटोनिक में। और अगर हाइपो में करोगे तो पानी अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो पानी बाहर गया था, हाइपो में पानी ने अंदर आना है। बट व्हाट हैज हैपेंड, द सेल हैज एक्सपैंडेड एंड बर्स्टेड बिकॉज इट हैड नो सेल वॉल. So in this case, the water potential of the cell sap is higher than that of the solution outside the cell. Osmosis will still take place, but this time the water would move out of the cell. And the vacuole will decrease, the cytoplasm would decrease. Vacuole और cytoplasm और सारे organelles को collectively हम एक term use करते हैं protoplasm. And this stage when it is shrinking is known as plasmolysis. तो plant cells क्या होते हैं? Plasmolized. प्लांट सेल्स आर ऑलवेज प्लाज्मोलाइट। लेकिन अगर एनिमल सेल्स को हम हाइपरटोनिक सिचुएशन में डालें, और यह प्लाज्मोलिसिस कब होता है, हाइपर की बात ही हो रही है, ठीक है। हाइपर में हमने प्लांट्स को हाइपर में डाला, प्लाज्मोलाइज हो गए प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स को भी हाइपरटोनिक सिचुएशन में डालना है, ये प्लाज्मोलाइज नहीं होंगे क्योंकि प्लाज्मोलिसिस इज डिफरेंट। सेल वॉल रहती है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस का दूसरा नाम होता है क्रीनेशन, जहाँ पे सेल कंप्लीटली लूजेस इट शेप, बिकम्स पॉइंटी शेप्ड और बिल्कुल खाली हो जाता है। क्रीनेशन होगी एनिमल सेल्स में, प्लाज्मोलिसिस होता है प्लांट सेल्स में। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, टारगेट प्रेशर मेंटेन रहता है प्लांट्स में। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज इन प्लांट्स एज वेल, इवन द यंग स्टेम्स, मोस्ट लीव्स, herbaceous non-woody plants are able to remain firm and erect because of the turgor pressure within their cells.
When there is a high rate of evaporation of water from the cells, they lose their turgidity and the plants wilts as well. आपके पत्ते गिरना मुरझाना शुरू हो जाएंगे अगर turgor pressure maintain ना रहे तो. The movement of certain plant parts are due to the changes in turgor. For example, changes in the turgor of guard cells causing the opening. कहाँ कहीं कहीं पे turgor pressure बहुत जरूरी भी है, जैसे कि opening and closing of stomata. जब पानी अंदर आएगा गार्ड सेल्स के तभी स्टोमेटा आपके पास ओपन होते हैं, और अगर पानी निकल गया तो स्टोमेटा की कुछ शेप ऐसी हो जाती है, दे आर कंप्लीटली क्लोज. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर. एक तो मेंटेनिंग शेप एंड स्टिफनेस, दूसरा स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज वेल. The folding of the leaflets of mimosa plants as well are also touched and caused by turgor of small dwellings as well. Certain flowers also open by day and close at night. वो भी changes in turgidity की वजह से ही होता है कि आपकी petals खुलती हैं, मुरझाती हैं, खिल जाती हैं दिन और रात को, and all of that. Plasmolized tissues are limp or flaccid. फ्लैसिड का मतलब हल्के से पानी जिनमें नहीं होता है, दस वो ज़्यादा एडवाइजेबल भी नहीं होता कि आप उसके अंदर मच फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालें, वरना वो सॉइल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी. इनसफिशिएंट वाटर की वजह से प्लांट मर भी आपके पास सकता है. So let me show you one video. Is everything clear about diffusion and osmosis till now? All right. अच्छा जी, नेक्स्ट है, हमने एक चीज देखनी है. Hello there. I know you wanted to learn about diffusion and osmosis. But before Hello there. I know you wanted to learn about diffusion and osmosis. But before that, you need to know something about concentration. And to understand concentration, we need some salt and water. First, what is concentration? Concentration is the measure of one particular substance in a solution. Not very clear, right? That's why we have the salt and water. Let's take a beaker full of water and add a few spoons of salt to it. Now this here is a solution. There are two substances in this solution. One is the salt and other is the water. We earlier saw that the concentration is the measure of one particular substance that is found in a solution. So the measure of salt present in the solution is the salt concentration, and the measure of the water present in it is the water concentration. As simple as that. Okay, now that you have an idea of what concentration is, let's understand diffusion. We are going to take another beaker, fill it with water. This time we are going to add colored salt. Notice that I'm adding it to one end of the beaker. In some time, it slowly starts to move, and after a while, you can see that it is spread throughout the beaker. This means that the salt, which was initially at the higher concentration at one end of the beaker, slowly started to move to the other end, where it was present in lower concentration. This movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. Usually, gaseous exchange across the cell membrane takes place by diffusion. You can also see diffusion happening around you every day, like when the delicious aroma of food spreads from the kitchen. But before you run into the dining room, let's quickly discuss about one more concept, that is osmosis. Again, let's take a beaker and fill it with water. We are going to divide this beaker into two compartments by introducing a semi-permeable membrane. Let's name these compartments A and B. Water can move through the semi-permeable membrane. Therefore, free movement of water molecules occurs across the membrane. As of now, the water level inside both the compartments is the same. Now, let us add few spoons of colored salt to compartment A. The salt cannot move across the semi-permeable membrane and gets dissolved in A. Now that we have added salt only to compartment A, we can say that the salt concentration is high in compartment A
and nil in B. Now, if you observe compartment A, out of all the water molecules, some are interacting with the salt molecules and the remaining water molecules are 3. Whereas in compartment B, all the water molecules are free as there is no salt added. So we can say that the free water concentration is higher in compartment B than in A. And we know that compartment A has more salt concentration than B. Now, if I apply the same principle of diffusion, that is, molecules move from regions of higher concentration to lower concentration, how do you think the water will move? Will it be in the direction of A to B or B to A? Obviously, since a higher concentration of free water is in B, it would be from B to A. We use a special term for this type of movement of water. It is called osmosis. We can define osmosis as the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration across a semi-permeable membrane. Let's see how osmosis happens inside a cell. Let's say there is a cell surrounded by a solution which has a certain amount of salt X in it. As we know, the cell membrane is semi-permeable. So it cannot let in this salt X, but it can let in water molecules. How would the transfer take place according to the osmosis principle? Well, there are 3 possibilities. First possibility is, if the water concentration in the surrounding salt solution is exactly the same as that inside the cell. In such cases, the surrounding salt solution is said to be isotonic. No movement of water will occur in this case. Second possibility is, if the water concentration in the surrounding salt solution is more than that inside the cell. The salt solution in this case is said to be hypotonic. Here, the water rushes into the cell, causing the cell to swell. This movement of water into the cell is called endosmosis. The term endo means entry. The third possibility is that when the water concentration in the surrounding salt solution is less than that inside the cell. Here, the salt solution is said to be hypertonic. Therefore, water moves out of the cell, causing the cell to shrink. This movement of water out of the cell is called exosmosis. Exo means exit. Osmosis plays an essential role in living organisms. For instance, the absorption of water in plants by roots and the absorption of food in freshwater unicellular organisms like the amoeba happens due to osmosis. Now, let's quickly recap what we have learned. Concentration is the exact amount of one particular substance that is found in a solution. The movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. The gaseous exchange between the cell and environment takes place by diffusion. The movement of water molecules from higher water concentration to lower water concentration across a semi-permeable membrane is called osmosis. The cell, when placed in hypotonic solution, swells because of endosmosis. The cell, when placed in hypertonic solution, shrinks because of exosmosis. Osmosis helps the absorption of water in plants and absorption of food in freshwater unicellular organisms. This was a complete brief and summary over osmosis and diffusion. Now, active transport is something opposite. हमने देखा था कि हर चीज हाई टू लो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती थी. हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी वो लो की तरफ जाएगी. अब हमने अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्लांट्स हैं, प्लांट्स नखरे वाले हैं, ठीक है. प्लांट्स के पास ऑलरेडी बड़े आयंस होते हैं, लेकिन उनको रूट से, उनको सॉइल से और आयंस एब्जॉर्ब करने हैं. अब प्लांट्स के पास तो ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सॉइल में लो कॉन्सेंट्रेशन है, तब भी वो और एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड देयर आर सर्टेन एडेप्टेशंस एज वेल.
that we'll talk about. Sometimes the living cells are able to absorb certain substances even through these substances are of higher concentration inside the cell than they are in outside the environment as well. This means that the cells are absorbing substances against the concentration gradient, जिसको हम कहते हैं active transport. Active transport is involved in a number of processes occurring within an organism, including dissolved mineral salts, root hair की absorption हो या glucose amino acids in small intestine हो. And it also depends on your surface area to volume ratio as well. जैसे अगर हम root hair cells की बात करें, root hair cells का structure ही कुछ ऐसा होता है that they can easily absorb a lot of ions from the soil because they penetrate. उनके जो hairs होते हैं, their hairs actually penetrate throughout the soil ताकि वो maximum active absorption कर सकें. One thing that scientists never take things for granted is always asking the question why. For example, we have seen the cells are very small structures indeed, so we should not just accept that why there we should ask that why are cells so small? Why is it then when you go swimming in the sea, you do not find gigantic amoeba, लेकिन वो बहुत छोटे हैं कि आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही उनको देख सकते हो. The answer to these questions are also related to the rates of movement of materials across cell membranes जो कि मीट करें. ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का एक तरह से जो एक्सचेंज हो रहा है, इन सब का पर्पस ये कि अपनी अपनी डिमांड्स पूरी कर सके, नीड्स ऑफ सेल्स पूरी कर सके, जिसको जो सब्सटेंस चाहिए अंदर और बाहर, और ये सब कुछ कर सके. And all of this rate of movement of a substance across a cell membrane depends on how much a cell membrane is actually available. Greater the area of cell surface membrane, the faster will be the rate of diffusion of a substance for a given concentration gradient. The following assignment will also help you get the idea of surface area to volume ratios. It might be easy to consider the cells in two dimensions. Food and oxygen diffuse into the cell through cell surface. Waste products भी उसी surface से बाहर जाते हैं. अगर आप absorb कर रहे हो तो release भी उधर से ही करोगे at the same surface area. Let's say the largest cell B has a more surface area than cell A, but it has less surface area for every unit mass of protoplasm compared to A. तो जाहिर सी बात है rate of food intake वहां पे slow होगा और दूसरी तरफ ज्यादा होगा. Active cells are small. For example, root की tips हो गई, shoot की tips हो गई, जहाँ metabolism बहुत slow हो जाता है when they're about to reach their maximum size as well. So that is how surface area to volume ratio also helps as well. और वो आपने answers का भी आप जवाब easily दे दोगे. That is all for your cell membranes and transport. You are going to solve the end of topic questions. Submit me today, and tomorrow we'll start off with your next chapter, which is going to be enzymes in tomorrow's class.